महक रहा है मधुबन तुमसे ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे ओ बाबा मधुबन वाले। आज बाप दादा हर एक बच्चे को सुने और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हो। एक, अपने नए जीवन की बधाई, और दूसरी नए युग की बधाई, और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नवयुग सामने आ रहा है। दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया किया है। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर है, और जल्दी से ये चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वो साल भूल जाता है, नया शादी सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे, पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग की। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा ने आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे। जिस नई दुनिया में प्राप्ति है, शार्ट में यही कहे तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु
दुनिया में ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रही है। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते। बाप ने हर एक बच्चे को ये डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को ये बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। वो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले। वो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे। ओम शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 27। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का विषय है सदा हर्षित चित्त। अव्यक्त इशारे। जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है। वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। पास विद ऑनर। ज्ञान की शक्ति। मीठे मीठे बच्चे बाप कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने आए हैं, इसलिए उन्हें बबुलनाथ कांटों का स्वामी कहा जाता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं सदा हर्षित चित्त रहो। जब हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो दुनिया में लोग पूछते हैं ऐसी कौन सी अच्छी बात हो रही है जो आप लोग खुश रहते हो। देखो दुख बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, आपस में मतभेद हो रहे हैं, जो इतनी बातें दुनिया में हो रही हैं और आप हर्षित हो। हर्षित होने की क्या बात है? ये बहुत बड़ा प्रश्न।
परंतु अब हमें समझ मिली है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और हमें अंदर कौन सी दुनिया बसानी है, जिसको बाबा कह रहे हैं कि पुराना युग परिवर्तन होकर के नया बनेगा। तो हमारे अंदर जो है वो नया युग है। हम पुराने युग को विदाई दे रहे हैं और नए युग के लिए जो अंदर में बन रहा है, जिसके हम निर्माता हैं, उसको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं। तो कैसे परिवर्तन समय का नियम है। जब दुनिया पुरानी होती जाती है होती जाती है, जैसे देखो सूरज है, उदय होता है, दिन भर उदय रहता है, फिर सनसेट हो जाता है शाम को जब सेट हो रहा होता है। पर वो दूसरी तरफ कहीं आप देखेंगे, कई बार जैसे दिखाई पड़ता है, ट्रैवल कर रहे होते हैं कि एक तरफ सूर्य सेट हो रहा है और दूसरी तरफ उदय हो रहा है, और फिर कई बार चंद्रमा और सूर्य दोनों दिखाई पड़ते हैं। नहीं, ये सब नज़ारे हैं। तो जिसको अंदर में अपनी मन की स्थिति कहें, अपनी वृत्ति है, अपनी दृष्टि है, उसको संचालन करना आता है, उसमें सब कुछ नया हो। तो इसलिए बाबा कह भी रहे हैं कि पुराने की विदाई के साथ सिर्फ समय और युग को हम विदाई नहीं दे रहे, पर अपने पुराने संस्कार और स्वभाव को भी विदाई दो। बहुत अच्छा होमवर्क है, और अगर हम सभी आंतरिक रूप से इसमें व्यस्त रहते हैं, दिन भर अटेंशन रखते हैं, चेकिंग करते हैं कि पुराना जा रहा है ना, जो बीती है सो बीत गई, जो होना था वो हो गया, ड्रामा। तो जैसे पुराने को पुराना ही समझ और आगे बढ़ना अर्थात नया करना। तो जब हमें ज्ञान होता है, देखो आप देखेंगे कि जन्म से ही हम सभी में जो संस्कार हैं वो स्वभाव में आते हैं। जैसे किसी को बहुत चिंता करने की आदत होती है, और वही बात में चिंता तो है ही, पर दूसरा कम करता है और कोई नहीं भी करते हैं। तो हर एक, जैसे हम देखेंगे बचपन से ही हर एक, जैसे कोई संतुष्ट रहते हैं बचपन से ही, और कई कितना भी कुछ होता है संतुष्ट नहीं होते हैं। कोई होते हैं मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कोई भी बात बड़ी होती है उसको छोटा कर देते हैं, और कोई होते हैं कि वो छोटी बात को बड़ा करते हैं। अब क्या है कि जब ईश्वरीय ज्ञान मिलता है और अपने अनादि गुणों का पता चलता है, आत्मा के जो गुण हैं वो प्रेम है, शांति है, शक्ति है, आनंद है, प्रेम है, सब गुण आत्मा के अनादि गुण हैं। और लक्ष्य मिला है कि जो अनादि गुण हैं वो हम अपने आदि गुण भी बनाएं। तो जैसे एक लक्ष्य मिला, अभी हमको लक्ष्य के समान बनाने हैं, तो काफ़ी काम है। और इस समय पर बहुत वैल्यूएबल टाइम है, अपने अंदर के काम में हमें व्यस्त रहना है। बेशक बाहर से कर्म करने हैं, व्यवहार करना है, अगर नौकरी है, व्यापार है, सब कुछ करना तो है ही, लेकिन करते हुए भी जितना जितना हम आत्म अभिमानी रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर से कर रही हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, करावनहार तो बाबा है, मैं तो करावनहार हूँ, करनहार हूँ। तो जितना जितना अंदर में ज्ञान का मनन, चिंतन और धारणा पर अटेंशन रहता है, उतना अंदर में संतुष्टि होती है और चेहरा हर्षित होता है। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि हम मुस्कुरा रहे हैं, हर्षित चित्त है। आपका चित्त ही सदा हर्षित रहता है, और हर्षितता का बहुत कनेक्शन है संतुष्टता से। अभी जब हम परमात्मा के बनते हैं
अपनी जीवन को हम समर्पित करते हैं, एक ट्रस्टी होकर के जीवन में रहते हैं, तो बाबा ने आज कहा कि सर्व प्राप्तियां होती रहती हैं। तो जो संतुष्ट है वो देखता है हर कदम पर जो भी ड्रामा में सीन आता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रही है, कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है। जा नहीं रहा है लेकिन आ रहा है सब कुछ। तो थोड़ा सा अगर हम इस दृष्टिकोण से अपनी जीवन को देखेंगे तो हर्षित तो रहेंगे ही ना। परंतु अगर हम सारा दिन बाहर क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं और क्या है, ये जरूर होता है कि देखो चलो बाहर से कोई मनुष्य आपके बारे में कुछ भी सोचे, पर अपनी सम्मान की मेरी क्या सीट है। तो सम्मान की सीट पर अगर हम रहें, तो बाबा ने कहा आप सम्मान अपने को फील करेंगे और नजदीक लगेगा। मेरे को तो ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी बाबा की, कि दई अभिमानी और सम्मान की स्थिति से बाप समान बनना बहुत इजी लगेगा। तो बाबा की बातों पे ध्यान देते हुए, अपना अभ्यास करते हुए दिन भर अगर हम व्यतीत करते हैं, सब कुछ करते हुए रहे, कर्म योगी हैं, परंतु अपना ये मनन चिंतन चलता है अगर, तो उन्नति भी होती है, खुशी भी रहती है और हमारा चित्त भी हर्षित रहता है। तो इसलिए है हमारे पास खुशी का समाचार भी है, व्यवहारिक रूप में भी है, नवयुग की स्थापना, और हम सब बाबा के मददगार बच्चे हैं। हम भी अपनी मनसा वाचा कर्मणा से नव निर्माण कर रहे हैं। हमारा सोचना, हमारा बोलना सब नए प्रकार का होता जा रहा है। तो कैसे हम अपने अंदर एक व्यवहारिक रूप से परिवर्तन लाएं? बाबा कहता है देखो, व्यर्थ समाप्त होना चाहिए। जो व्यर्थ सोच चल जाता है ना, उससे एक तो अपना सम्मान कम होता है, और फिर जैसे एक देह अभिमान आने लगता है, देहभान आता है। तो जब भी व्यर्थ सोच चले, इमीडिएटली सोचो मुझे व्यर्थ नहीं करने अपने संकल्प। ये संकल्प है किसी श्रेष्ठ कर्म में, किसी प्लानिंग में, बाबा की याद में इन संकल्पों को यूज कर सकती हूँ, मैं वेस्ट क्यों करूँ। तो ये दिन प्रतिदिन रियलाइजेशन आती जाती है और वेस्ट खत्म होता जाता है, तो प्राप्ति होगी ना जरूर। बाबा के बनते हैं तो बाबा के कार्य में हम सहयोगी बनते हैं, समय भी देते हैं, धन भी देते हैं, और वास्तव में हम बाबा को कुछ नहीं दे रहे हैं, जो वेस्ट जा रहा था उसको सफल कर रहे हैं। कितना समय हमारा, आज इस मॉल में चले जाओ, आज ये फिल्म देखने चले जाओ, आज रेस्टोरेंट में खाने चले जाओ, आज ये करो, कितना समय हमारा वेस्ट जाता था। नहीं, बाबा के बने अपना ब्रह्म भोजन खाते हैं, घर में भोग लगाते हैं, सारा कुछ परिवर्तन हो गया ना। तो जो समय हमें बचा, जो धन हमें बचा, वो हम बाबा की सेवा में समय भी लगाते हैं, धन भी। तो बाबा का दिया हुआ जैसे बाबा को दे रहे हैं। बाबा के पास कोई, शुरू शुरू की बात है, मैं भी 70 साल पहले कोई 10 रुपए लेके गया। उस समय 10 रुपए भी बहुत होते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे कितनी कमाई है, अच्छा कितने बच्चे हैं, कितनी बचत है, अभी क्या 10 रुपए। बाबा ने उसको 5 रुपए दिए वापस, बोला ये बचत करो।
तो बाबा कभी ये नहीं कहता है कि अपने लिए नहीं रखो, बचत नहीं करो। हाँ, परंतु सब करते हुए भी हमारा जो व्यर्थ जाता था ना, वो हम सफल कर रहे हैं। ऐसे ही कपड़े उठा के ले आएंगे, यूज नहीं करने हैं। कोविड के टाइम लोग कहते थे अपने क्लोजेट से ही शॉपिंग करो, क्योंकि एक एक साल, दो दो साल पहले कई चीजें लेके रखी हैं, वो कभी यूज ही नहीं की, अभी करो। तो जो कुछ व्यर्थ जा रहा था, वो बाबा सफल कर रहे हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो लगता है प्राप्ति ही प्राप्ति है। बाबा को हम कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे सकते, बेशक अब कहते हैं कंट्रीब्यूशन। भगवान को क्या कंट्रीब्यूशन देंगे? दाता को तो क्या है, दाता तो देता ही रहता है, राइट। कई लोग 51, 101, 21, तो मैंने बोला जैसे चंदा देते हैं ना, पर बाबा के लिए तो है किसका, किसने दिया? आज धन में बरकत है, बाहर तो नहीं है ना दुनिया में। हमारे पास तो जैसे जो है वो जैसे बहुत ही है, संतुष्टि है हमको, और हमेशा होता ही होता है। तो हर्षित रहने के, हर्षित चित होने का भी अब संस्कार स्वभाव बना लेना चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को होमवर्क क्या दे रहे हैं कि सदा हर्षित चित रहो। जो हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, कितना त्याग किया, क्या जीवन थी बाबा की। अपना व्यापार था जवाहरत का, इतना अच्छा परिवार था, सब कुछ था, पर जब परिवर्तन हुआ तो बाबा सदा हर्षित रहते थे। कौन मिला है और उसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो सरल चित्त होता है, अभी चित्त की बात आती है ना, बहुत सूक्ष्म है। तो जो सरल चित्त होता है वही बाबा से मधुरता के गुण संपन्न है। इधर उधर का तरीक सोचो ही नहीं, अपनी मधुरता बनाए रखो। जब हम फालतू सोच जाते हैं ना, तो मूड डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वही सदा हर्षित रहते हैं, हर्षित चित हैं। तो बाबा कहते हैं सबका, सबको आकर्षित करते हो। छोटे बच्चे कितना आकर्षण करते हैं, क्योंकि हर्षित रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हर्षित का अर्थ क्या है? अति इंद्रिय सुख, एक ऐसे सुख में है जो बाहर का नहीं है। तो बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलना, ज्ञान का सिमरण करो। अति इंद्रिय सुख में रहो, सारा दिन इंद्रिय। और अति इंद्रिय सुख क्या है? तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सिमरण करते रहो और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूलना, इसको कहा जाता है हर्षित रहना। सुनना है, फिर से सुनो कि क्या कहते हैं बाबा। ज्ञान का सिमरण करते रहो, अतीन्द्रिय के सुख में झूलो, तो इसको कहा जाएगा हर्षित मुख, हर्षित चित। ऐसा जो हर्षित रहता है वो सबको आकर्षित करता है। एक छोटे बच्चे को भी इतनी समझ होती है, कोई रोता हुआ होगा ना तो नहीं देखेगा। आप मुस्कुराओ, कोई भी मुस्कुराता है तो बच्चा उससे बात करने की कोशिश करता है। तो स्वभाव से वास्तव में
हर्ष मुक्ता हमारा स्वभाव होना चाहिए। परंतु सोच गलत था, मार्ग गलत था, बोल गलत था, अभी सब ठीक होता जा रहा है। हमें कौन से सुख में रहना है, स्वभाव कैसा होना चाहिए, जो आत्मा सदा हर्षित का मतलब प्रफुल्लित रहे, उमंग उत्साह में रहे। तो अभी बाबा ने हम बच्चों को ये होमवर्क दिया है कि हमें अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ये बहुत ही फिर क्या, इंद्रिय नहीं चलाएंगे। बाबा ने देखो कभी भी भोजन है, जब यज्ञ शुरू किया तो जो समर्पित हुए सब माताएं, बहनें, भाई सब, किसी को भी इतना भोजन नहीं बनाना आता था, क्योंकि घरों में बड़े घर से थे, सबके पास नौकर थे, खाना बनाने वाले थे। तो बाबा ने फिर एक बहुत अच्छे शेफ को बुलाया कि सब कुछ सीखो। तो कभी भी बाबा ये नहीं कहता कि कुछ अच्छा लगता है तो नहीं खाओ, पर ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि वो हमारी कर्म इंद्रिय हमको खींचते रहे। संयम जरूरी है, नियम जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को समझ कर, अटेंशन देकर, बाबा ने कहा पुराने को विदाई दो और सब नए को बधाई दो। विदाई भी दो और बधाई भी दो। मुझे तो ये दो शब्द बहुत अच्छे लगे कि दिन भर क्या करना है, कुछ विदाई देते रहो और बधाइयाँ देते रहो। तो अभी हम सभी कुछ क्षणों के लिए अपने मन में एक संकल्प रखेंगे कि मुझे अति इंद्रिय सुख में सदा हर्षित रहना है। ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। अव्यक्त वाणी तारीख है 20 जून 1977। सदा सहज योगी बनने का साधन है महादानी बनना। अब सहज योगी बनने के लिए कौन सा प्रयत्न करेंगे? सहज योगी बनने चाहते हो ना, तो सदा सहज योगी अर्थात सदा सहयोगी, सदा सहज योगी बनने का साधन सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व के सर्वात्माओं के प्रति सेवाधारी समझ
सेवा में ही सब कुछ लगाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन सर्व खजानों को आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ। जो बाप द्वारा शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। तेरी मीठी मुरली की धूम सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। तो शाम को अचानक बाबा ने बुलाया। ऑफिस में बैठे थे और बड़ी दीदी साथ बैठी थी। फिर बाबा ने कहा, बच्ची मधुबन में रहोगी? मैंने कहा जी बाबा। अच्छा दीदी, बच्ची की टिकट कैंसिल करा दो। मैंने नहीं पूछा बाबा क्यों, क्या कार्य है। बाबा ने आज्ञा दी है, ओके रहे। फिर बाबा ने कहा कि एक भाई था उस समय में, ये जगदीश भाई नहीं, हमारे दूसरा था जगदीश, उसको भी वो सिंधी और हिंदी दोनों भाषा जानता था, क्योंकि बाबा मुरली चलाते थे, ईशु दादी नोट्स लिखती थी, फिर उसके बाद उसको फेयर करते थे, फिर हिंदी मुरली लिखनी होती थी। तो वो लिखते थे तो उनको कोई काम से बाहर जाना पड़ा, बाबा से छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए भी था कि कौन लिखे। उसके बाद मैं थी जिसको दो भाषा आती थी। सीखी तो बाबा का पत्र पढ़ने के लिए, पर ये मेरे लिए लिफ्ट गिफ्ट बनेगी मुझे मालूम नहीं था, पर उस समय सिद्ध हुआ। तो कहा, बच्ची वो जगदीश बच्चा जा रहा है, आप जो है ना मुरलिया लिखो। मैंने कहा जी बाबा। उस दिन से हाथ से स्टेंशल काटना शुरू किया और हम मुरलियां लिखती थी। मनीषा दादी की नोट्स पढ़ करके और हिंदी में लिखना, और लिखने के बाद फिर सेकुलर स्टाइल हमारे जमुना प्रसाद भाई करते और मुरलियां जाती थी। फिर कुछ समय पड़ा तो बाबा ने बुलाया, तो कहा, बच्ची सिंधी लिखना आता है? मैंने कहा बाबा पढ़ तो लेते, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। अगर बच्ची नहीं सीखेगी तो बाबा कहेगा या तो शौक नहीं है, या तो कहेगा बुद्धू बुद्धि हो स्टेट। मैंने कहा बाबा मैं सीखूंगी। तो मैंने जाके दादा विश्वरतन को बोला। दादा विश्वरतन ने हमको बहुत हर बात में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहयोग दिया। भूल ना सकेंगे बाबा
Om Shanti. Imbibe the virtues of sweetness and humility to become great. Remain constantly cheerful. Those who are easy-natured are full of the virtue of sweetness, and they remain constantly cheerful. Those who are cheerful attract everyone to themselves. To be cheerful means to swing in the swing of supersensuous joy. While churning this knowledge, experience the avyakt stage and swing in supersensuous joy. This is known as being cheerful. Those who remain cheerful in this way attract everyone. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 27. Imbibe the virtues of sweetness and humility to become great. Today's topic: remain constantly cheerful. Pass with honor. Waste thought. This shouldn't be happening. Spiritual power to finish waste thought. Power of knowledge. Baba's magic mantra. Sweet, sweet child, the Father came to make you. The Father came to make the forest of thorns into a garden of flowers. This is why he is called Babulnath, the Lord of Thorns. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. Very, very happy to meet Avyakti Parivar worldwide. Even in Madhuban, we don't meet the whole family. Different time, different groups, different countries. But it's only when we are together now. So it's like world family. And to meet family, to be in family together, always makes us happy, right? So I must say that we all are very happy. Just we wait for evening or morning, wherever, whatever time is in your area. There is happiness. Today, Baba is using one word in Hindi, it's called chit. And this is more like part of awareness. Whatever is in your mind or what internally touches you or your response or react or act from there. And it's something which is very subtle, right? Like we will ask in other words, what's in your heart actually? What really you want to say? So that reality, that deeply within you, what really your thoughts are. What you mean really thoughts are, right? Thoughts are thoughts. In the mind there are thoughts. But this is something like you have created or you wanted, or there are so much layers in those thoughts. But then we say, what exactly is in your heart or in your mind?
And that's connected with awareness. Whether it is desire, whether it is feeling good, not feeling good, it's a lot of things happen. If we go deeply within and see from where all that is emerging. So someone today asked that how Brahma Baba had so much responsibility, giving message, being in front, have big family of 300 plus, and he was very, very light. And I also always remember there was one time when many little children, teenagers, many had just come to live together with Baba. But then family was not necessarily interested. So they all came to take back children. And children won't want to go. So Baba was standing on 5th floor. It was a big building. And looking downstairs with these little children. They said, no, we're not going. Anyway, Baba had to send them because they had to bring letter if they are not 16 or. But many came, mostly with the families. Because Baba knew that every time Baba will say, it's not me, it's Shiv Baba. He has adopted children. And he always remembered Baba, God, but also the victory. Truth is truth, and there is victory in the truth. There is a saying that the boat of the truth shakes but never sinks. It does shake, because today is not the world of truth. We're living in the world of falsehood, but we want to live the life of truth. So it's a boat which could shake. But once we understand that these are different waves and circumstances, but I should have a very unshakable, immovable stage, then we don't move or don't shake. So today Baba is saying that it's like your heart should be cheerful. It's not only external, but it's really I'm very, very happy. Is mind happy, intellect happy, or heart is happy? So we have to look into that. And Baba says, those who are easy nature, all full of the virtue of sweetness, they let go, move forward. Anything anyone said, it's all right, Not sit with them, not hold these things in the heart, because then heart becomes heavy, right? So Baba is saying that one who is easy natured are full of the virtue of sweetness, and they, Baba says, remain constantly cheerful. Don't make, we make things complicated. The way we think, it's like a big thing. But I think it's up to us now how to make everything simple, easy. So it's like, there are a lot of examples can be given. I remember that, when little children, they keep crying, right? So mother will say, he's very sleepy now. Or he's hungry. Right? There are two things they mention. I hear them. And so they try to make
child sleep, child doesn't sleep. Then give the bottle of milk, and while drinking he's sleeping. So when I find that some of our children just always have something, and I say they need rest. Maybe they need rest. Because when body is rested, mind is rested, your thinking is very positive and normal. But when you are tired and you haven't eaten properly, it affects our thinking also, right? But same could be spiritually also, right? Whether it is nurturing ourselves with food that is spiritual knowledge, and keep ourselves internally very happy and in satisfaction, that is the rest of the uh, soul is kind of in rest, or mind is resting. So this is all, as Baba is saying, that those who are cheerful attract everyone to themselves. And this shows that everyone loves happiness. Anything you see, hear makes you happy, you want to hear again. But something which doesn't make you happy, you don't want to hear it again and again, right? So it's very interesting, Baba says, to be cheerful means to swing in the swing of supersensual joy. A happiness which is not being taken from any physical or sense organ. Today I'm happy because I had good food. So Atindriya Sukh means it's not coming through senses, it's not coming through physical organs, but it's from the soul, internal, deeply. So that is called supersensual joy. Baba says uh, while churning this knowledge, that's most important. What did Baba say today? What did you think about it? Churning of knowledge. Experience the avyakt stage and then swing in the swing of supersensual joy. Avyakt stages go beyond, right? Vyakt is all the time presence and physical, everything. But go little beyond. So that is avyakt stage and supersensual joy. This is known as being cheerful. So Baba said those who remain cheerful in this way also attracts everyone. So everyone, the swing of supersensual joy. When you are kind of feeling that you are going beyond the feeling of your body, but you are in soul conscious state. In the beginning, when some of us who used to sit and feel the pull to go to Baba, and then there, uh, like you are in so much supersensual joy that you start, your hands and everything goes in like, they call it ras, not dance. In dance you are still aware of body, but when you are doing it, you're not aware how your hands are moving, feet are moving, in great intoxication. So hot that stage, that's the stage, then you do feel you are swinging in a swing, and that is of supersensual joy. So I think it's a good thing for our homework. We think about
the swing of super senses joy. And for that, as Baba said, just go beyond and be cheerful. Mm. It's something worth experiencing and creating our nature. Mm. I'm okay, but I'm in super senses joy. Not only okay, that is higher than being okay, right? So, Baba has given a good homework, and definitely we will make it as our practice. Om Shanti. Hello, Didi. Hello, Madhuban. Om Shanti. Om How Shanti. many times a day does Baba say, Wah, daughter Mohini, Wah? Tell me. Waha children, Waha drama, Yeah, but Waha you Baba. know, this morning, and I'm remembering that bhakti story of Ganesh and Kartik, Yeah. and where they had the challenge of going around the world, and in order to get this special mango or something. And so I think Ganesh went around a couple of times, went around his parents. You've been around the world twice today. Yeah, really. And what was very interesting for me was because it got opened up to everyone else. And this had sometimes been a question, why can't the other students also hear both of you speaking? And so I just had a quick look because I had to look at the YouTube version of it. And it had something like about 1,500, hits, probably a lot more by now. I don't know how many were on the Zoom, but before the hits would just be in the region of 300 or 400. And so really, you've been around the world twice today. So around the parents. Well, thank you. Thank you for the compliment. Yeah, really. And you're still looking so fresh. So what is general comments, or is it questions like 1,500? No, that would be the number of people who went on to the link to the YouTube in order to see. And like me, they maybe went on afterwards because they weren't able to be on when it was live. And I'm sure it's increased by now and will continue to increase. So it's just that a lot more people were able to see both of you, which was great. Because one of the way to connect with people now is really through internet or through, because writing hadn't been easy, keep replying emails. I think best is really now to meet meet the whole family. But you know something that struck me as well, Didi, is you're amazing in that every night you're answering questions from different angles about the different subjects, about the history, personal questions. You take on all of those. You still give classes, but you no longer give public talks. And I'm wondering about that because I'm remembering how powerful those were too. Different settings. I was with you in different countries, and you would give public lectures, and of course people would come. And so the wealth that you have, the power that you have, we need to find a way to share that with people who are not Brahmins. Have you thought about it? Yeah, Sister Gayatri had been saying a lot, even for Avyakti Parivar, that part of that could be for Lokik people, so that we can invite them. And now, because when I was in India, there was big interest on, some or other, this whole sparkle of Avyakti Parivar. So television, we have 3
channels, Awakening, then we have Godlywood Studio, we have Brahmakumaris, we have Peace of Mind. And so they start thinking we should give to Peace of Mind, and now it is in Peace of Mind. And you must have noticed that I do proper, 15 minutes for Hindi or 15 minutes, Yes, yes, yes. because, yeah, the Hindi one is being played in Peace of Mind, and Brahma Kumaris channel play all. So I think I keep in my mind now that it's not only our BK family listening, but it's also those who are in contact or those who have interest. They turn on the channel and they are listening to that also. So I think gradually it might become like public and the family both. It's going towards that direction, Oh, and that's that great. That's yeah, great. So yeah. it has been considered. Really, really feeling that today in what you were sharing, and even about, how we present God, and being aware of to whom it is you're speaking. Some people don't believe in God, and we have to be careful with our words. One of the things, there's so many things, but you said something that Baba had told you, that as you move towards your state of perfection, then there will be love coming towards you. At the present time, I see that there's also almost devotional feelings towards you. Mhm. Your bhakti has begun, that they do see you, and they when I say they, souls, they do see you as the goddess that you are, and that you're becoming, in a sense. There must have been times when there had been maybe opposition, or so in what way have you seen maybe souls who weren't so loving before change, and even where respect changes and has become love? Not that you're looking for love, but have you seen that? Mhm. Yeah, when you're saying it, I'm able to kind of look back and look at present. Yes. That I think that these days souls want to feel God's love, and many will come. Lot of them these days. Uh, Something happening to my health, or we have started center, but these are the obstacles, or this is what we want to do, we're not able. I listen to them, and I know that Baba is the one who has to fulfill whatever are the obstacles or whatever task they have to get accomplished. But then I think we have to become instruments where people can just say, if we tell them, so somebody just say, go and tell these, go and tell these. So Yeah. I listen to them, because where will they go, in the sense of wherever there is hope, there is a bhavna, there is, it's like they know that this can work. So I just listen, and they don't expect anything. I just say, going to be okay. So I think that people look for this kind of support, and they might call it blessings, but these days in Madhuban, Bhumiben, they call so many calls. Can we meet? Can we meet? And she says, but no, there is not much time, and just Toli and blessing. Just Toli and blessing. Really, they just come in the line in the evening and keep taking Toli and blessing, Drishti. And these days, everyone has phone, so they take photo. They feel very happy about it. And that's, I think, definitely that bhavna. And, then I also feel kind of love for them, responsible also in a way that that task should be finished. One person last day when I was leaving,
seems to be a good person from somewhere. I don't want to mention city, but he said just have something where we can say what we want to say. You don't have to reply. So I had been thinking about it. He said just have one number where we just say it, that this is what I'm going through, or this is what I want, or this is what should happen in Yagya, whatever we have to say. And you don't have to reply. Then I was thinking it is important these days people to express, what is in them, or if something is happening or bothering, or they want to see the change, so where they will go. But So even today I was thinking that how to create something like that. and you already know this, Didi, and it's been the experience that when people do call you, even if you don't pick up the phone, or they call Baba's house, and maybe they don't get an answer, but by their remembering Baba, that being their inspiration for resolution, for resolving it, that even without you as an instrument or whatever getting back to them, they will get an answer. They will get it resolved. And so that faith in you as an instrument, or the faith in, Baba's house or whatever, that so I can see it. But otherwise, if you have to listen to all of those things, and then it might take a lot of your time. But if they're just saying, yeah, and there'll be some who will keep talking for 10 minutes. But yeah, we could find a way to do it, I'm sure. Yeah. And so that feeling of being heard. And so this thing too, Baba saying today about, I was having a little trouble with this word cheerful. And I asked some Hindi speakers, and they're saying that it rhymes with, attraction or whatever. And so cheerful usually means somebody who's grinning, who's always outgoing with people, but it's more this internal thing. And I'm not sure it's a good substitute, but joyful might be a slightly better word, as you mentioned, that is to do with the chit as well. And so I've forgotten what was the question to ask you about that. Oh yeah, right. And so, like, say for instance, do you think of yourself that you are seen as a cheerful person? It's not a word I would use to describe you personally. And I was thinking of Daddy Janki. Before she came to the West, everybody saw her as very serious, right? They wouldn't have said she's cheerful. And so, and you as well, you're much more, there's a word gravitas. You come with this, gravity, if you like. People see you as substantial. And so do you feel that that has changed over the years? That, how you are inside and how you're actually seen, like people, your power is immense. And so people feel that first. Like cheerful is somebody who's very friendly and running around and meeting everybody. And that's not your nature. No, maybe in Hindi, cheerful is more like, they call it, that means your face has blossomed. Oh, okay. It's like All in Hindi, right. they say, Harshit Mukh. Right. Mukh is your face. Yeah. And Okay. Harshit, I think it's like blossomed, Nice. more like, when somebody looks at you. So it's not question of smiling, or That's much it's not nicer. question of how you are with the people. Yeah. But internally, because even word full is like a good word, that whether it is joy or peace or Yeah. love, you are full. Yeah. So I see the fullness and blossomed more as cheerful, means that's what it means. In Hindi, that's how I will soak in.
Because Yeah. whenever I sit here and Bhumi Ben said, smile, smile, I said, well, I thought I am smiling. But some people think smile is, a little bit more. So I think, well, definitely, uh, yeah, I think that as we grow spiritually, we are more carefree, we are more light, and we are more as I just have to be what I am. I tell everyone just be very natural what you are. Yes. And Yeah. then what will happen? You won't be tired. I'm not pretending, I'm not kind of showing off. I am this is what I am. So very transparent. It's not I am, somebody said, if someone is sweet in the words but have bitterness in the mind. Yeah. I said it won't work, but same like no sugar coated things. Right. Oh, some are sugar coated, they're not really sweet. But all Yeah. this, yeah, but I find with the time, because your mind is very much loving, you don't carry anything for anyone. Really, very, very quiet and lovely state of mind helps, to be remaining light. So And what you're saying is again in reference to what Baba was saying today, like what is the real secret of a natural nature? mm, And I know that is your encouragement for all of us to be naturally our own selves. And I think the answer maybe came in that little bit of the Avyakt Murli from 77. mm, Maybe to do with to have an easy nature. Was it you have to be was easy. it generous to be in the store or something? So how to have a natural nature? Mm. No, I was thinking about when Baba says that soul consciousness should be natural nature. Okay. And so I was kind of watching myself or others. It's not whole day we practice, I am soul, I am peaceful, I am loveful. But then maybe whatever we have practiced for so many years, our nature must be soul conscious. Uh-huh. Right. Maybe 80%, 70%, which sometimes we are not aware, but we had Nice. been practicing for a Yes. long time. So, but I had been really kind of looking for to have that nature of soul consciousness, because Baba said that will make you feel that you are very close to becoming like Father, because that is the next stage. First is natural nature of soul consciousness, and second is you feel like Baba. Because that's what God is about, is incorporeal point of light and his eternal qualities. And so in soul consciousness, everything will emerge, right, in a very natural way. So I Yeah. was very fascinated and kind of underlined that that's what is the main attention or practice we should have. And two other things. One, that nature, like Brahma Baba, and you explained, and it was in the Murli, how much responsibility. Do you have as much responsibility as chief of the BKs? No, it's a much bigger organization. When I think that our ship has we are so many, so many, so many. But what I find that at the seed, what you have to do, I don't look at expansion of the tree. And I say, let's say Baba has put me into the roots and the seed. Mm-hmm. So what I have to do is to just take nourishment from Baba, Beautiful. in the sense Beautiful. of keep taking, so that from the seed, it can go naturally to branches and to Oh, that's leaves. so Yeah. nice. So I Yeah. try to, whether I do Amrit Vela or whole day, I do think of such a big family. And, I think not more as my responsibility, but I see as
as I said, becoming the seed Yeah. so that everyone can draw whatever they want Yeah. from that seed, nurturing quality. Yeah. So that's what I am paying attention to, that whether I have to say something or do something should have some nurturing so that all the leaves, branches feel that they are being watered and Well, something certainly like that. the role, you look very comfortable in it. It's like second nature to you, and we know that you've put in the groundwork over all the years, and it's not deserving of it because it's not a reward, but a capacity that, I think, yeah, I am becoming comfortable because everyone looks at me now that way. And like I was not all the time aware, but now, everyone's the way they look at their expectations, and which in a way has helped me to kind of, becoming donor, becoming. So on one side, I shouldn't be aware, but other side, awareness is also helping to bring some of the capacities and some of the more virtues to be shared with others. So it is both ways. So responsibility is like, how to become just source of inspiration, good example. If people want to learn what is Srimad, how to do right way, they could use a good example. well, I know my time's up, even though we have other questions, but I just want to say, Didi, that we loved you before you became famous. Today I was thinking that, when we look at the age of body, you don't feel that. Like I always felt when I came to Baba, I was young Kanya, and I still feel that. And then, of course, body is body, and but my whole thing now, I today said why Dadi Janki used to say I am 16, and same feeling I had that I'm still a teenager. When I came to Baba, lot of good memories come, and then I say, oh well, body is older, right? So I think that many different feelings do emerge, but yeah, I'm very light. No, you are. And that time that Daddy said that we were all together, it was the first NCO and it was in Oxford. And so, like my generation, we're all there, Charlie, Denise, Maureen, Gayatri, and all of those. And Daddy told that story. She said, when I came to England, I was 60. And I felt like I was 16. And then she said, I got to be 70, and I felt like I was 17. And now she said, I'm in my 80s. I feel like I'm 18. And then she looked at us and she said, but you've all become old. That is true. You look better than many of us, Didi, and we're younger. Anyway, thank you so much for a lovely day. Yeah, thank you. Thank you for making time, right? Om Shanti. Om Shanti, what do you Om Shanti, thank you. So tomorrow is Monday and our schedule from Amritula 3:30 am to 4:45 am. In the evening 5 to 5:30 p.m. Avyakti Children Murli class, 6 o'clock Patti will start, followed by Hindi series, English series and chit chat. Now let's remember Baba and take Drishti from Didi.
में ओ बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं तेरी यादों के झूले में ओ बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं नैनों के इशारे हमें बाबा, नैनों के इशारे हमें बाबा, वतन की सैर कराते हैं, वतन की सैर कराते हैं तेरी यादों के झूले में ओ बाबा। गूंजी मुरलिया जब से तेरी, हमें लगता कि सुनते हैं जो लोरी, तन मन की सुध बुध भुलाए बाबा, तेरी यादों में खो जाते हैं तेरी यादों के झूले में ओ बाबा। हाथों में है हाथ जब से लिया, रूहानी रंग में हमें रंग दिया, तेरे प्यार के पंख लगा के बाबा, उड़ते उड़ते तेरे पास आते हैं तेरी यादों के झूले में ओ बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं नैनों के इशारे हमें बाबा, नैनों के इशारे हमें बाबा, वतन की सैर कराते हैं, वतन की सैर कराते हैं तेरी यादों के झूले में ओ बाबा, तेरी यादों के झूले में ओ बाबा। ओम शांति, ओम शांति।